हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बना रहे हैं, थंबनेल देखकर तो तुम सभी ने गैस कर ही लिया होगा। आज मैं बना रहा हूँ ब्रोली। तुम सबको ब्रोली पता ही होगा, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी आउटलाइन बनाने में बहुत दिक्कत आई। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये कि मैं बहुत दिनों के बाद ड्राइंग कर रहा था क्योंकि मेरे 10th बोर्ड्स थे, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे पेन के लेड ये बेंड हो चुकी थी। Watches the breeze, burns gold and smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks. स्केचिंग हो गई है पूरी, अब बारी है इंकिंग की। अब इंकिंग भी डन है, अब है कलर करने की बारी। मैंने फेस से कलरिंग करना स्टार्ट कर दी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ड्राइंग कर रहा था, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। Swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. It's out of my control. You set the play in motion. Couldn't be a bigger ocean. Tell me, darling, is this what you want? मैंने बीच बीच में कुछ गैप्स भी छोड़े हैं ताकि लास्ट के टाइम पे हाईलाइटिंग करते टाइम इजी होगा। Bright flashing by the street lights, keep waiting till you've arrived. Let it unfold, let it unfold. Give me a reason to feel right. I keep waiting for the morning light. I let him fall.
ऑलरेडी डन है, अब है बैकग्राउंड की बारी। ब्रोली के ऑरा का इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल।